even though I was involved with a lot of things, there was always one thing that was getting a priority focus, and there were a few important things जो कि side by side चल रहे हैं. Hustle got the priority. I did everything that I wanted to do. I explored everything I wanted to. College textbooks aren't going to help you that much, जितना हाँ. the people around you in that college are going to. It's very important to stay happy, I guess. Now this conversation is with a person who was named the all-rounder of his batch, and no surprises about that because he built multiple startups, won hackathons both at the national and at the international level, was a part of the college football team, headed multiple college clubs, and all the while maintaining that image of the cool dude with the guitar and also a decent 8+ CGPA. He is Mudit Shivendra, a BITS Pilani 2022 pass out, currently working as a software developer at Cisco and also building his startup Folks. He is the best person who I feel can guide us on the topic how to maximize your college life. I hope you like the convo. So hello Mudit भैया and thank you so much आप join कर पाए and कैसे हो आप, मतलब क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में? यार मस्त हूँ, और फुटबॉल चल रहा है, स्टार्टअप चल रहा है. यस, लाइफ कीप्स गोइंग ऑन. हाँ. So starting with this, कि मतलब what factors आपको लगता है कि helped in you earning that tag, कि आपको सब लोग all rounder क्यों बुलाते हैं कॉलेज का? ठीक है, सब लोग बुलाते हैं, दैट इज अ गुड थिंग. आई थिंक रीजंस बिहाइंड इट कैन बी, मैंने बहुत ज़्यादा एक्टिवली बहुत सारे क्लब्स में पार्ट लिया है. मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव था, और आई वॉज वेरी मच इनटू डूइंग स्टार्टअप्स एंड वर्किंग ऑन हैकाथन प्रोजेक्ट्स. आई वॉज इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ क्लब्स, तो आई गेस वहाँ से बहुत सारे कनेक्शंस बन गए, सब जानते थे, तो दैट्स हाउ इट टर्न्ड आउट. हाँ. तो मतलब अगर आप इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे, जैसे यू से हैकेथॉन्स, स्पोर्ट्स, अब आप क्लब्स वब्स उसमें भी पीओआर वीओआर हो गए, सो ये आप प्रायोरिटी लिस्ट कैसी होती है? लाइक हाउ डिड यू एलोकेट योर टाइम टू, मतलब इसको इतना टाइम देना, इसको इतना टाइम, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको सब कुछ अच्छे से करना है, तो आपका वो कैसे आप मेंटेन रखते हैं कि द स्टैंडर्ड शुड रिमेन द सेम? अगर आप इतने हाथ जितने भी फैला दो, वो खराब नहीं होना चाहिए. ओके, ठीक है. तो एक्चुअली मुझे थोड़ा और डिफाइन कर देना चाहिए मैं किस किस चीज में इन्वॉल्व था. तो आई वाज इन द फुटबॉल टीम, आई वाज इन ACM, व्हिच इज द कोडिंग सोसाइटी एट बिट्स, एंड आई वाज इन द कल्चरल क्लब ऑफ UP, and I was, so I play guitar, so I was very much involved in jamming ऐसे इधर उधर wings में. And apart from that, like as I said, I was involved in a lot of startups first year onwards itself, and academics obviously. So coming to your question ki how to prioritize, how did I prioritize everything? So ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा लेट रियलाइज किया था, हाउ टू प्रायोरिटाइज एवरीथिंग. फर्स्ट ईयर वाज बेसिकली, स्कूल के बाद फर्स्ट ईयर वाज अ सदमा. ठीक है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओके, एकेड्स में भी थोड़ा फोकस कर लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में घुसते ही माय गोल वाज टू एक्सप्लोर एज मच एज आई कैन और मेक एज मेनी कॉन्टैक्ट्स एज आई कैन इन माय बैच, इन माय विद माय सीनियर्स. और मतलब I just wanted to explore everything that was going on around in the campus. So that sort of impacted my first year. But then later on I realized कि okay, triple E भाई सुबह 8 बजे एग्जाम्स देने होंगे, तो I started like कि okay, एग्जाम से एक रात पहले भाई पढ़ लो, तो थोड़ा सा मेंटेन्ड रहेगा. आपका वो ऑल नाइटर रहता था क्या, मतलब आपका एग्जाम का एक दिन पहले? हाँ, so काफी बार ऑल नाइट रहता था. आई मीन विंगीज एक दो मिल ही जाते हैं जिनका सेम कोर्स होता है, राइट? सो मतलब वाइब मैच जाती है, सब लोग एक कमरे में पड़े कॉफी के साथ घोट रहे होते हैं, तो वो दैट इज वेरी नॉर्मल, हर विंग में यही होता है. अच्छा, बट मतलब जैसे आप एकेडमिक्स को आपको करना है, सो अब फुटबॉल में आपकी हेल्थ भी ज़रूरी रहती है जैसे, एंड ऑल नाइटर के बाद इट्स ऑब्वियस कि मतलब आप इतना ज़्यादा एनर्जेटिक या फिर फिट फील ना करो. हाँ, आपकी कभी आपके दिमाग में ये ऐसे टेंशन रहती है कि मतलब
हाउ मैं मेरी हेल्थ सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, मैं मतलब बीमार होने के ज़्यादा चांसेस है, ऐसा सब मतलब ऑल नाइटर के बाद। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन हेल्थ ये सब हसल कल्चर में? ओके, ठीक है। सो सी, फुटबॉल इज माई पैशन। मैं अभी आई ट्राई टू प्ले फुटबॉल एवरी डे। आई joined you all for the alumni interbits team as well, ठीक हाँ है। हाँ So हाँ हाँ मतलब I am pretty, so taking part in football, working out for it, ऐसे सुबह उठ के 3 घंटे प्रैक्टिस करना, फिर शाम को 2 घंटे प्रैक्टिस करना during peak Blossom season, that was हाँ। exerting but not stressful, ठीक है। ओके So ओके। और मतलब गिवन कि यू आर इतना एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन सम हॉबी ऑफ योर्स, ऑब्वियसली यू नीड टू रेस्ट, राइट? तो एट दैट टाइम मतलब टू प्रायोरिटी वाज फुली टू फुटबॉल। बॉसम आ रहा ओके। था, we have to win the हाँ tournament and we I couldn't like मतलब I couldn't sacrifice my time over football itself. Okay, so I somewhat had to manage between my club activity and my academics. ओके। And again, academics, there was a realization कि okay, something basic तो I had to maintain anyhow, ठीक है। So I mean, रात को एंड वाला पार्ट इज फॉर एकेडमिक्स, सुबह का अर्ली पार्ट इज फॉर फुटबॉल, शाम का पार्ट is for football. I didn't actually have to go and attend lectures, which was a good point about bits. उस समय we got recordings. I don't know about what happens now. So I just used to binge watch lectures instead of Netflix, and ओके। वो मेरा entertainment भी हो जाता था। Uh, और बाकी club active involvements were also going on. So at this, by the time I took part in Bossum, I was a part of Elixir Systems, which was a startup. ओके। I was there as well. So I mean, मैं बॉसम का एग्जांपल इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि एट दैट टाइम वन ऑफ माय हॉबीज टुक अ वेरी मेजर पार्ट इन माय डेली लाइफ रूटीन, ठीक है। दैट वाज दैट वाज सम दैट द टाइम स्पैन ऑफ फॉर दैट वाज अराउंड अ वीक और सो, ठीक है। सो ओके ओके। दैट वीक आई एग्री कि मुझे बहुत ज्यादा घिसना पड़ा। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग। हाँ I don't exactly remember, but what मैंने जो अभी एज अ मदद किया होता दैट वुड हैव बीन कि मैं आइदर ये बोल देता कि मतलब I sort of talked it out with my seniors at the startup and sort of we had, क्योंकि वो भी बिट्स इन स्टार्ट seniors थे, right? So they knew तो वो what is समझ coming लेगा। up for me and they sort of addressed it also कि ठीक है यार, अभी मस्ती कर ले फिर काम करते हैं। तो see, the thing is, even though I was involved with a lot of things, there was always one thing that was getting a priority focus, and there were a few important things जो कि side by side चल रही थी, जैसे academics. ओके। Academics was never a priority for me, by the way. हाँ So it was always a side thing, but a constant side thing that was being maintained throughout. ठीक है? तो apart from the parallel process, हमेशा like तू context switch हर रोज भी कर सकता है, हर हफ्ते भी कर सकता है। You can handle it yourself. It's just कि तू कितना easily अपने दिमाग के साथ ऐसे खेल पा रहे कि एक दिन तू ऐसे fully startup पे focus कर रहा है और एक दिन तेरा goal is completely different, making a app for some fest. तो वो context switch is easier at colleges because काफी मस्ती चल रही होती है। इट्स नॉट लाइक कि मतलब इवन दो यू हैव अ लॉट ऑफ वर्कलोड, स्टिल यू आर नॉट स्ट्रेस्ड बिकॉज विंगीज होते हैं मस्ती करने के लिए, राइट? तो वही कुछ वही भी वही। नहीं हुआ तो रात को आंख जाके चिल कर लिया या फिर किसी कमरे में जाके कुछ कर लिया। तो हाँ तो बेसिकली दैट्स हाउ आई मैनेज एवरीथिंग। मतलब आप ऐसे बातों से काफी ऐसा लगता है कि यू बिलीव इन द हसल कल्चर, ठीक है, मतलब कि दिस इज द एज ऑफ हसलिंग 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 हसलिंग। सो डू यू बिलीव इन बैलेंस राइट नाउ कि जैसे आप एक आपका काम एक जगह है, आपकी रिलेशनशिप्स एक जगह है, एंड सॉर्ट ऑफ आपकी हेल्थ मतलब जो हमने अभी जस्ट बात करी, तो डू यू बिलीव इन दैट बैलेंस की मतलब कि अभी की या फिर अभी जस्ट गोइंग ऑल इन ऑन योर वर्क, मतलब आई गेस अभी आपके सैक्रिफाइस हो रहे होगे आपके रिलेशनशिप्स आई मीन फैमिली फ्रेंड्स सब। ओके,
ठीक है. So हाँ I guess there are 2-3 questions here. तो first coming to managing relationships और कितना balance रहना चाहिए उनके साथ. तो यार, हाँ I mean, those are the important people, right? तो उधर तो it's never a, मतलब you don't need to take out your time as a task कि उनसे बात करनी है हम्म या कुछ. It's just a हम्म normal flow. मतलब काम के बीच में ब्रेक लिया, you can talk to them while having coffee as well. So हाँ हाँ, health. I mean, sleep cycle तो बहुत खराब थी, to be very honest. ठीक है, I हम्म wasn't taking care of my sleep cycle, and I don't think it mattered, at least in my हम्म case, because मतलब if you talk about fitness wise, staying healthy, that was being handled by football. Okay. ओके And हाँ रात को सोना wasn't really a priority. मतलब हम्म 4-5 hours, 5-6 hours of sleep was enough. ठीक है. So I हम्म didn't actually want to take out time to sleep again. So uh, उधर भी ऐसे कुछ ऐसे as such मेरा focus नहीं था to maintain balance. And talking about the hustle culture, so हाँ so that is one thing that I was very looking forward to when I entered college. ठीक है कि हम्म मचाना है, कुछ फोड़ना है. तो that was the goal that I had, and I sort of managed everything around it. Okay, so that was the ओके priority focus only. So अगर तू ओके से पूछ रहा है कि हसल के बीच में सब कुछ बैलेंस कैसे हो रहा है, so it was कि hustle got the priority. I did हम्म everything that I wanted to do. I explored everything I wanted to. I हाँ played football because that was my passion, हाँ and whatever time was left for sleep. लाइक करंटली अभी आपके प्रेजेंट के सिनेरियो में मतलब अभी भी आप शायद बैलेंसिंग चली रही होगी क्योंकि यू आर वर्किंग इन योर कंपनी सिस्को और अभी साथ साथ आपका स्टार्टअप भी चल रहा है फोक्स सो ये दोनों में आप कैसे प्रायोरिटाइज करते हो एंड हाउ डज अ डे इन योर लाइफ लुक लाइक राइट नाउ करंटली Yeah, cool. So Cisco, my job is a remote job, ओके and I do get a lot of tasks from that side as well. But it's like, uh, I since it's a remote job, I have all my desktops open on my table. Okay, so if I just हाँ switch the camera aside, you will see two more desktops over here. So this one हम्म that I'm talking to is my company desktop only. Okay, so it's हाँ uh, like I am in a tech role. Okay, I get tasks to make tech solutions for हम्म, them. Now हाँ that I can do at my convenience. It does not involve too much collaboration with बहुत सारे लोग. I mean, अगर it would have been a product role, तो मुझे दिन भर बस calls ही करने पड़ते, इधर उधर लोगों से coordinate करना हाँ पड़ता. हाँ हाँ So हाँ I sort of chose my job also in a way कि I would be able to take out time to do other things that I feel important. हम्म, And yes, so like I get free around 6 p.m. right, from my ओके job, and after हम्म that again it's hustle time. So हम्म, that is the dedicated time जहाँ पे मैं ऐसे actively push कर रहा होता हूँ अपने startup को. And apart from ओके that, even though अगर during my office if I get a call from someone, हम्म, anyone from the हम्म, team, uh, I just take it up. It's no issue. Like I don't have to be actively stay on the laptop to perform my job. गॉट इट सो मतलब इज इट सेफ टू से कि मतलब सुबह मतलब आपका आई गेस 9 to 6 इज फॉर Hmm. सिस्को वर्क और Yeah. फिर आफ्टर दैट द स्टार्टअप वर्क बिगिंस और वीकेंड्स पे फुल ऑन स्टार्टअप या वीकेंड पे भी पार्ट रहता है भाई. मतलब Yes, so weekends are the ऐसे primary day of work for me, प्राइमरी डेज हाँ हाँ जहाँ हाँ पे actually maximum काम carry out करना होता है. सो मींस वीकेंड में सिस्को का भी काम रहता है आपके साथ या फिर इट्स कंप्लीटली अबाउट फोक्स So I try to wrap all of my work within 9 to 6 नाइन time टू frame सिक्स that I ओके have. Yeah. गॉट So इट गॉट इट I don't spend extra time after my job ends to do tasks or complete deadlines. मतलब it does definitely, it might impact me somewhere down the line जब मुझे ऐसे एक बहुत urgent काम करना पड़ जाए और I mean, my job is interfering with the startup work. In that case,
that might be an issue that can arise, but I try to get all sorted Sorted by the week with or my partners. 96. नाइस नाइस। मतलब आप अपने स्टार्टअप के बारे में थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हो अबाउट फोक्स फॉर द ऑडियंस Cool. लाइक? So ठीक है, so as I said, मैं बहुत सारे क्लब्स में इन्वॉल्व था and I really loved being a part of all those clubs. इतना ज़्यादा ओके। एक्टिविटीज चलती रहती थी around the campus, around the year, हाँ and हर समय कुछ ना कुछ चल रहा होता था. It was never like कि भाई कैंपस बोरिंग हो रहा है, ऐसा तो कभी हाँ। नहीं हुआ. मतलब if you ask me to come to campus अब भी I would be that much excited itself, even though मेरे ऐसे बैचमेट्स नहीं उधर, just because मेरे जूनियर्स है उधर. So I'll just go and interact with ACM people and see क्या चल रहा है. फुटबॉल टीम के साथ ट्रीट ले लूंगा. तो हाँ basically कुछ ना कुछ चलता रहता था, हाँ। and all these club activities and all the things that were going around in the campus, I really missed those after I graduated, or once the lockdown started in COVID. Okay, so ओके। then I realized कि यार, I'm sitting in Delhi, I'm missing all this. Why isn't such a culture available in my locality? So that's what I tried to solve there. हाँ। So we created a mobile platform called Folks, and it's up on Play Store. You can go and download it. It's in ओके। Bangalore. It's working in Bangalore right now. So what we're trying to do is we're creating various clubs around various interests in each and every locality. We're trying to push people to do that. Okay, so let's say ओके। you like playing guitar, हाँ। rather you like photography. I know that. Okay, so you like ओके। photography. You come to a new city called like Bangalore. You don't have many friends over here. You don't have many people with your similar interests over here. What you can do is just download Folks, and you can find all sorts of like-minded people around you, and you can go on a maybe go on a trek with them. So on the trek you'll realize कि भाई पूरा ग्रुप ही इधर उधर फोटो ऐसे बहुत awesome clicks ले रहा है, and they're discussing all that. So that's the like-minded group that you would like to go out and have fun with, right? So that's a good starting point for anyone moving to any city, or anyone who feels like exploring any interest. They can hop into our platform and explore all this. Man means like always means जब भी मैं आइडिया सुनता हूँ it's I just feel that it's something big for the future. तो hoping fingers crossed और मतलब it's really helpful for people like हम जैसे मतलब कॉलेज के बाद सब लोग they are gonna miss this, so all the very best for that. But for someone like me जैसे जो अभी कॉलेज में है, like मुझे कोई क्लू नहीं है कि मतलब क्या स्टार्ट मतलब आइडिया को फाउंडर मतलब कैसे स्टार्टअप चालू करना चाहिए। मतलब आई नो कि इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं होगा, बट कैन यू जस्ट शेयर हाउ डिड यू फाइंड दिस, आपका आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट करना है एंड योर को होस्ट कैसे सिलेक्ट किया आपने, विश्वास भैया जो Okay, है। हाँ। cool. ठीक है. हाँ। So as you all can see कि Ayaan knows a lot about our startup. He knows about हाँ। Vishwas. So Ayaan was also our member for some time. So हाँ। ठीक है. So how did I go on to start everything? So I think ठीक है. It's definitely easier to do your own startup once you have an idea of seeing a startup how it grows up. And I think ये सारी opportunities bits ने काफी ज़्यादा provide कर दी. Bits, especially my seniors, ठीक है. So in my first year itself, I got a call from fourth year IETs कि we have the startup, we're making an AR app, बहुत cool सा, and you should join us. And that was their starting stage. और हाँ। मैंने literally उनके साथ ऐसे उनका 0 to 1 में पूरा पार्ट लिया. वी वेंट ऑन टू क्रिएट एनसीईआरटी ई पाठशाला एआर ऐप, एंड थ्रू आउट द प्रोसेस आई वाज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड. एंड मुझे दिख रहा था कि ओके, सो व्हाट मतलब व्हाट आर दीज गाइज डूइंग. कब इन लोगों ने ऐसे कोलैबोरेशन सीख करना स्टार्ट किया, कब इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि ओके वी आर गुड टू गो, लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग, या फिर व्हाई शुड वी गो ऑन टू slightly modify our product a little bit. So ऐसे एक basic idea मिल जाता है of how to approach people, which is initially missing when you like when you're starting up for the first time. ठीक है कि how to approach things. एक initial idea you get through it. So there are a lot of clubs around this also.
so I really like CEL. Matlab, हाँ. they also try to give as much exposure as possible to unke members. They try to create startup like situations jahan pe you हम्म. can go on and get such exposure. So I think ye sari exposure ke baad it's like finding a problem statement and then just getting into it. Okay, so once you have the problem statement, and having a problem statement means ki it's not just you, it's a lot of people around you. Matlab, obviously you can't survey million people, but हम्म. ob- matlab, you should go on to validate your problem statement if it's big enough, if solving this is big enough. And yes, that's it. Then you just need to assemble a very awesome team. And if you're a tech person, you can like if you're a tech person, you can, I think, get started right away. You can start creating your product from the feedback. If you're non-tech, then it's very important that you find like-minded people who are interested and that passionate about your idea and getting them on board. So see, enthusiasm is very important in the starting team. If that's हम्म. missing, then काम नहीं चलेगा. Okay, Yeah. you need to हाँ. find people who are actually oriented towards the idea, not just towards the stipend या फिर getting the LOR out of the startup. And you have to treat them like founders only. मतलब जो तुम्हारी starting team है, they all are working their asses off कि like this as a group succeeds. Okay, so ensuring that is very important, and recruiting people hence is very important. हम्म. So उसमें काफी focus देना है. And once you have a team, then I think responsibility split करना and just dividing ki who would be working on the collaboration, who will be working on the pitches, who is directing the product. हम्म. Later stages may you might need a marketing team as well. So that you can figure out down the line. In the journey itself, you get a lot of insights. Matlab, हम्म. even now, I'm getting a lot of insights as I'm working right now, and this was the case when I started up as well. So I Yeah. think वो सारे insights को लेके ऐसे making important inferences from them and continuing is important. It's very good to have senior connects. Okay, so Senior connect. hum- हाँ. you're calling me, right? So Yes. there was one time when I was calling some of my seniors ki what's going on, I was just noticing ki someone is working in blockchain. Oh bhai, blockchain is something cool. Someone is working हम्म. in AR. What are हम्म. those guys doing? Can हम्म. I somehow join them and see how हाँ. working out for them? So ऐसे Okay. मतलब experience sort of transfers down हम्म. generation by generation inside the college atmosphere itself. So I think उसका काफी फायदा उठाना चाहिए सबको. मतलब that Okay. helped me a lot. बट कमिंग टू द को फाउंडर विश्वास भैया जो है, वो आपने लाइक हाउ डिड यू म्यूचुअल बोथ म्यूचुअली एग्री दैट वी कैन बिल्ड अ स्टार्टअप टुगेदर, बिकॉज having the right co-founder is one of the most important parts of a startup and any business. Cool. So अगर मेरे पर्सपेक्टिव की बात करा जाए, I don't know हाँ. about Vishwas how he found me, but I was basically working with a lot of people on various projects. Okay, there's one team where I'm actually able to implement stuff. हम्म. ठीक हम्म. है, हम्म. and it's going in a very positive reinforced manner, and हम्म. that was the team I was in with Vishwas. Okay, so ओके. we हाँ. both started taking up hackathon projects together. We participated in ओके. various case study competitions, hackathons. We won a few national hackathons. We won an international hackathon as well. We were awarded by the European Commission. And हाँ. I mean, we were creating stuff already before even starting up. एक दिन randomly we sat down and decided कि okay, let's create something around this. We are very bored, ओके. and we did. तो मतलब आपने वो लाइन आई गेस सुनी होगी दैट बिल्ड अ फ्रेंडशिप अराउंड बिजनेस, नॉट अ बिजनेस अराउंड फ्रेंडशिप. सो आपको क्या लगता है कि हैज इट अफेक्टेड द फ्रेंडशिप एस्पेक्ट, बिकॉज इतनी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में आई एम श्योर कि आपके दोनों के डिफरेंट ओपिनियंस आते होंगे, एंड उसमें Hmm. क्या आप कितना ये अग्री करते हो ये स्टेटमेंट पे? That is a tough question.
Let me think. ठीक है. So building a friendship over business or business over friendship, there might be ऐसे conflicts of opinions and हम्म everything. So how to tackle that? I mean, it's not necessary to have a friend as a co-founder, right? ठीक है. मतलब that can be any person, and you won't know कि that is the right person or not unless you unless you face some try. adversity. ठीक है. तो तब तक you won't get to know it. And when something falls onto you कि भाई हम्म okay, हम्म there's an obstacle, then how हाँ you solve it together sort of determines if it's going to be a success or not. ठीक है. So ओके me and Vishwas got a lot of idea around this while working in our hackathon projects. हम लोगों को बहुत सारी ऐसे implementation problems आई on the tech side and everything, and we sort of did a workaround to all those together. So it was कि that's how trust is established, right? So see, even if Vishwas wasn't my co-founder, he would have been a great friend because he was my wingy. So I ओके don't think I would relate friendship to the startup idea. It definitely helps us crack jokes around sometimes, but I think that you can do with anyone. But it's like कि whoever you choose as the co-founder, you guys should be able to solve problems when they arise. सो लाइक आपकी जो जर्नी है मतलब द एंटरप्रेन्योर जर्नी में जो बहुत ग्लोरीफाइड है फ्रॉम द आउटसाइड बट आई नो कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो रहती ही होगी व्हाट्स योर मतलब सबसे अभी तक का चैलेंजिंग पार्ट कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है एंड उससे बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिला अभी तक Hmm. ऐसी कौन सी एक इंस्टेंस या फिर कोई फेज रहा है ओके. सो मल्टीपल. ठीक है. सो मल्टीपल स्टार्टअप ओके जर्नी में तो ऐसे एवरी वीक यू विल कम अक्रॉस वन. सो ओके in the start it was कि we all are tech people, we don't know how to do business. ठीक है. हाँ So हाँ convincing people to use us, use our app, use our platform, and somehow convince them that we would be also going on to collect commission from you guys for this, and you'll have to in some way pay us. So that is basically हाँ the business aspect. So it's like we tried it with a few people, let's say 10, हम्म 14 people. हम्म We got to learn a lot new things, that okay, there's something called leverage, we need to ensure that we have the leverage and everything. So हम्म slowly, like our pitch got modified as in when we got into the market, started conversing with people. It's not like कि तू बस निकलेगा and पहले बंदे जिसे approach करेगा he'll get on board. That is very unlikely. हम्म You'll have to convince people, and convincing people is not exactly what a techie does. तो ओके वो एक स्टार्टिंग इशू था. बाकी देर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज. ठीक है. वाइल योर प्रोडक्ट जर्नी तुम्हें बहुत सारी चीजें रियलाइज होंगी कि दिस इज नॉट वर्किंग, और मे बी वी नीड दिस. सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब यू हैव टू कॉन्स्टेंटली बिल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, एक्सपेरिमेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स. यहाँ पे पेशेंस काफी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है. So I think that is also a fair challenge. नाइस 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 मीन्स अभी स्टार्टअप्स के बारे में काफ़ी आइडिया लग गया बट कमिंग टू अ सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन कि व्हाट्स योर टेक ऑन द प्लेसमेंट सिनेरियो करंट सिनेरियो और स्पेशली आप बिट से अभी 2 साल पहले ही प्लेसमेंट लेके निकले हो तो आई गेस यू कैन गिव अ मोर करंट ओपिनियन ऑन इट आपका क्या राय है ऐसे कैंपस प्लेसमेंट्स बिट्स के प्लेसमेंट्स कंसिडरिंग रिसेशन अभी चल रहा है वो सब Hmm. प्लेसमेंट सीजन आ गया है तो Cool. So, matlab, I am in connect with my juniors, and matlab, I've got to know कि definitely there's a shortage of jobs and everything क्योंकि recession चल रहा है and everything. So at my time it was ऐसे golden era. ठीक है. मतलब I mean Amazon was the mass hirer during our time. So ओह और क्या चाहिए. ठीक है. So हाँ हाँ मतलब that was a good period to be in. But abhi bhi, even though recession and everything is going on, I think after becoming so much capable, after joining bits and everything, after graduating, after getting so much exposure from the campus, if you're actually looking to do something in that field of work, let's say if you are enthusiastic about tech, you can obviously
try off campus, and the alumni network is very awesome. Okay, you'll find someone or the other working somewhere or the other. Okay, so just reach out to them, and everyone is very helpful. So even during my time, even though it was the golden era, I had so many off-campus backup options ready with referrals, so that if Okay. worst case happens, why not go and join these? So it's it's definitely good to stay connected with the alumni Okay. from and I mean it's a yeah, so you don't actually need to worry about getting a job. That's what my opinion is. You get a job, and it will be an awesome job only. You just need to have the right connects that we have being a part of Bits Pilani. Like by connects, but I guess you mean ki we still have to approach people and maintain the connections, and maintaining the connections in my opinion is the difficult part, कि मतलब हम अप्रोच कर देते हैं बट आफ्टर मतलब फिजिकल टच नहीं रहता तो उसकी वजह से द कनेक्शन गोज ऑफ. अभी जैसे आप बैंगलोर में हो and you are still in connection with your juniors, so and also I'm sure with your alumni and the other seniors, so how do you maintain this connection, or आपके college time में अभी how do you plan to maintain the connection in the future? अभी हम लोग ऐसे रेफरल्स की बात कर रहे हैं, राइट? तो डेफिनेटली हैविंग कनेक्शंस विद सीनियर्स हु वर देयर इन कॉलेज विद मी is much more easier as compared to someone I randomly approached on LinkedIn who was also a part of Bits only. But in that case, I would be just trying to ask for a favor. It won't be like that person knows me. I might go on to chat with him a little, tell a little about my journey and everything. I might stay connected after he gives me a referral, because like, he helped me out, right? So that's how complete strangers connection works. But if you talk about your seniors and juniors, there, I mean, there are multiple treat opportunities, okay, in campus. तेरे को एक ना एक सीनियर ट्रीट कभी ना कभी दे ही रहा होगा, और नहीं दे रहा है तो जाके मांग ले. एंड ट्रीट्स आर बेसिकली मिक्सर्स, ठीक है? वहां पे जाके यू गाइस डू रैंडम मस्ती along with ऐसे थोड़ा सा ऐसे you update each other with what you guys are doing, and like it's a normal conversation only, ठीक है? It's just that कि you are in touch with that person. And let's say I have my seniors who were 2 year senior to me. I just, I mean, I just found one walking down the road. I stopped him, say, "क्या चल रहा है?" No, भैया treat. Exactly. So, भैया treat works always. ओके. अच्छा अच्छा. और आप अभी करंटली हाउ आर यू इन कनेक्शन विद योर जूनियर्स? मतलब अभी तो जैसे आप ट्रीट नहीं दे सकते, तो अभी आप कैसे? तो हाँ यार, अभी so when I come to campus, then मैं treat देता हूँ ना. नहीं, जैसे आपने पहले बोला था कि हाँ कि यू नो द करंट प्लेसमेंट सिनेरियो भी. हाँ, तो ये आपके जूनियर्स सामने से आपको बताते हैं या फिर यू अप्रोच देम, और मतलब आस्क देम Yes, कि so ठीक है, I have a lot of juniors as यार. That is the thing about bits ना, मतलब it's not something new that I'm talking about here. It's a default mentality in bits कि you approach your seniors seeking for mentorship, ठीक है? People do it by default. So मुझे भी बहुत सारे juniors का ऐसे personally, मतलब if they have any query about anything that I did and might help them out, they just ping me and I tell them to call me, बता क्या हो रहा है. तो we just have a discussion. I provide some insights, and like I'm not at all hesitant to talk to any of my juniors or anyone from BITS, or anyone in general, whoever seeks mentorship. And that's the case for any person at BITS, I think. So everyone is free to share their experience and help people out. अब डू यू थिंक कि आपके लाइफ मतलब जो आपके डे इन द लाइफ में यू हैव सम हैबिट्स और सम रूल्स जो आप कभी ब्रेक नहीं करते एंड विच हैव हेल्प्ड यू टू मैक्सिमाइज आपका आउटपुट, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी? आप कुछ आप में यूनिक हो जो आप शेयर करना चाहते हो? एनीथिंग यार, okay.
Hmm. uh, given I'm running a startup, I have Hmm. to handle a lot of things, and matlab, I don't know how many of you would prefer this, but मैं तो sticky notes बहुत ज़्यादा use करता हूँ. Every task that comes around my way, even the call with Ayaan is a sticky note on my wall. तो हाँ. मतलब it just helps me keep track of things. मतलब see, when you're involved in a lot of things, the only issue remains is कि you don't miss Managing. out on anything. ठीक है? Okay. हाँ हाँ हाँ. You need to have a to-do list. I think that is one thing that I have. And Hmm. उसे छोड़ के क्या? I mean, uh, it's very important to stay happy, I guess. Okay, Stay so happy. हाँ. मतलब हाँ, and stay happy, हाँ, exactly that. Finding So the fun elements in the smallest portions could be हाँ, being and enthusiastic as well. हाँ. even if it is not that small, I just Hmm. stop my work and go to play football because I like Hmm. playing football. So it's like you need to be happy while you're working. Okay. ओके ओके. हाँ. मतलब जो ये वो होता है माइंडसेट की पुश योर लिमिट्स और पुश थ्रू इट. लाइक आई नो समटाइम्स विच इट्स वेरी नेसेसरी कि यू हैव टू वर्क व्हेन इवन यू डोंट फील लाइक इट. सो व्हाट्स योर दैट लिमिट कि इसके आगे मैं काम नहीं कर सकता, मुझे कुछ ब्रेक लेना ही पड़ेगा बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग इट. Okay. Yeah, when you start feeling tired, I think that is the point when you should stop working and हम्म. look out for something fun to do and just get refreshed. Even if you're ओके. having a bad mood or anything, एक हम्म. ब्रेक लो, सब सही हो जाएगा. चल अच्छा है. एंड ये मुझे पहले पूछना चाहिए था, बट हाउ मच डू यू बिलीव इन दिस स्टेटमेंट कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन. कि आप जैसे आप यू आर इन्वॉल्व इन मेनी थिंग्स राइट. सो इट वाज नॉट पॉसिबल कि आप एक ही चीज को इतना टाइम दो कि यू बिकम द बेस्ट इन इट. मतलब यू स्टिल डिड इट टू अ वेरी गुड एक्सटेंट, बट ये स्टेटमेंट आप कितना बिलीव करते हो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ नन. मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ दैट यू हैव टू बी somewhat a jack of all trade, but also be a proficient in one skill that you are known for. ओके. आई थिंक मैं इसे अपने टाइम मैनेजमेंट कंटेक्स्ट में बताता हूँ. सो हाँ. एट अ टाइम यू हैव 5 tasks. ठीक है? हम्म. You have to prioritize one task. हम्म. मतलब at a given time you have to be the master of that task. It's not like ओके. कि तू पांचों टास्क साथ में अपने एक एक हाथ से इधर उधर एक वर्ड इधर टाइप किया, एक वर्ड इधर टाइप किया, एक वर्ड इधर टाइप किया. हाँ It हाँ won't हाँ. happen. ठीक है? And till when do you have to be the master of that particular task? That is what you have to judge based on your ओके. experience. So matlab, if I have something at my job that is very important, I have to set aside everything else and be the master हाँ of that task itself. हाँ. How frequently you can switch between mastering your tasks is the skill, I think. डू यू थिंक ऐसी कोई चीज़ है जो यू फाउंड आउट एट अ लेटर स्टेज अबाउट योर सेल्फ और अबाउट लाइफ अबाउट वर्क, जो थोड़ा अगर आपको पहले पता होती या फिर हम सबको आप अगर बता सको, सो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस. वी वोंट हैव टू रिपीट द मिस्टेक और गो थ्रू द एक्सपीरियंस I अबाउट mean, कॉलेज there was स्टार्टअप one कुछ भी. point that I mentioned earlier only. This is हम्म. one point that I uh, sort of faded out beach mein when I was very much involved into pushing my startup ahead, and that was the fun part. Okay, ओके. I हाँ. was not having fun. I was totally determined to do everything हम्म. as soon as possible, and हम्म. हम्म. बाद में जाके आई रियलाइज कि ओके, दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच, दिस इज नॉट हेल्दी. तो हम्म. I switched back to my college mode where I have fun as well as I do work. So I think it's not something that I realized at a later stage. It was happening earlier. I forgot it in between and then I re-realized it. मतलब फन से मतलब व्हाट्स योर मीनिंग ऑफ फन की, मतलब स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, फुटबॉल हाँ. और Yes, सेम. ओके. exactly that. Anything ओके. apart from sitting 24 hours in your room and coding हाँ is हाँ fun. हाँ. अच्छा. तो एंड इन योर डे कॉलेज में
हाउ वाज योर टाइम अलोकेटेड, लाइक कितना टाइम आप कोडिंग या फिर फॉर योर वर्क, और कितना टाइम, मुझे पता है इतना सेग्रीगेटेड नहीं होगा, बट अप्रोक्सीमेट आइडिया कुछ आप दे सकते हो कि how much of your time went to coding, how much work and हम्म fun? ठीक है, सो इट वाज लाइक कि फुटबॉल वाज 2.5 hours, वो तो हाँ। कांस्टेंट है, एंड हम्म। स्टडीज 2 to 3 hours, वो भी कांस्टेंट है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। हम्म। और ये मैक्स केस बता रहा हूँ, ठीक है, हाँ हाँ मैं हाँ कोई हाँ फुटबॉल, सो इट वाज समवेयर अराउंड 30 minutes to 3 hours फॉर कॉम्पीज आई थिंक। और 50 minutes to 3 hours for compris per day? हाँ, कॉम्प्री टाइम पे यस, मतलब बहुत। कॉम्प्री में हाँ एक्चुअली ऑल नाइटर भी लग जाते थे, 3 hours इज इन द लिमिट, तो ठीक है, वही वही कॉम्प्रीज तो और वही। पढ़ना पड़ता है। हाँ हाँ, हाँ वही तो। लेट्स नॉट अप्लाई टू कॉम्प्रीज। हाँ ठीक है, एंड बाकी जो भी टाइम मिला है दैट इज माय एक्सप्लोरिंग टाइम। उसके अंदर मैं कोड करूँ या फिर कोई स्टार्टअप एक्सप्लोर करूँ या फिर कोई और फील्ड एक्सप्लोर करूँ, या फिर जस्ट ऐसे देखूँ व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन अमंग्स माय सीनियर्स, वो लोग क्या क्या फोड़ रहे हैं, कोई जी सॉक निकाल रहा है, कोई हाँ हैकाथन फोड़ रहा है, हाँ कोई हाँ हाँ। कुछ कर रहा है। सो आई मीन एवरीथिंग वाज कंसिडर्ड इन रेस्ट ऑफ द टाइम दैट आई हैड, उसका ऐसे कोई स्प्लिट नहीं है। मतलब आपको कभी ऐसी ये फीलिंग आती थी, फीलिंग बिहाइंड वाली, व्हेन यू सॉ, मतलब जैसे अभी आपने बोला कि कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई चीज फोड़ रहा है, जैसे मतलब इन माय केस मैं जब भी लिंक्डइन खोलता हूँ मेरी मतलब ऐसे फट जाती है कि मतलब यार ये भी ये कर रहा है, ये भी ये कर रहा है, ये भी ये कर रहा है, मैं क्यों कुछ नहीं भाई? कर रहा, मैं ऐसे ही बैठा हूँ। तो ये आपके साथ होता था? जस्ट क्यूरियोसिटी क्वेश्चन। नहीं होना चाहिए एक्चुअली, गिवन नहीं कि होना you're चाहिए। वर्किंग गिवन कि you're वर्किंग ऑन समथिंग you're passionate about, क्यों हम्म कंपेयर करना है किसी और से? मतलब आई हम्म। मीन दे आर नॉट डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, राइट? ओके हाँ। सो मतलब देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन इट, तो ऐसे मतलब ठीक है यार, किसी ने ऐसे फॉर्च्यून 30 अंडर 30 निकाल दिया या कुछ कर हाँ। दिया, बहुत फोड़ दिया, यूनाइटेड नेशंस में अवार्ड मिल गया किसी को, हम्म। it doesn't matter. I You're doing what you want to do. I'm doing what I want to do. ओके ओके। हाँ I चलो, mean, दिस if you're not वाज। sure what you want to do and you're just ऐसे going with the flow without any ambition, तब हम्म ये feeling आना बनता है। मतलब then you don't know what to do and you're just seeking out कि what all can I do? ये लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, okay, I should also try this. पर given कि you're already pursuing a passion, फिर तो भाई compare करने का मतलब नहीं। ओके मैम, दिस वाज एन इम्पोर्टेंट मैसेज, तो गुड टेक अवे। और अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी टेक अवेज फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन। और 50 मिनट्स हो गए, मैंने रियलाइज भी नहीं किया सच में, अभी जस्ट टाइम देखा मैंने। और थैंक यू सो मच विनीत भैया। और दिस इज नॉट द एंड, एक चीज़ बाकी है बस, बट पहले ही ये मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है कॉन्वर्जेशन, क्योंकि दिस वाज समथिंग व्हिच वाज इन माय माइंड काफ़ी लंबे समय से, कि मतलब सब कुछ में अच्छा बना, ऑल राउंडर, एंड देयर वाज नो बेटर पर्सन देन यू व्हिच कुड गाइड अस। सो हाँ, ये थोड़ा सा मस्का मारने वाला हो गया ना ये, बट Yes. ठीक है। And for the audience as well, I hope that they also got some takeaways. And any messages for the audience, ki how to maximize your college life? How do you think that students can maximize their college life? Any messages on that? Yes. Personal message है, okay. So Okay. personal message is कि college textbooks aren't going to help you that much जितना हाँ. the people around you in that college are going to. So Okay. Hmm. Make the most of focus the on people. the important thing. Yeah. Your environment is more important. Understood, Vidya. So thank you so much, Vidya, and all the very best with folks. All the very best with your journey ahead. Well, हम सब बहुत excited है कि आप क्या करने वाले हो, तो और थैंक यू वेरी मच, एंड बहुत ज़्यादा थैंक यू हो गया, बट ठीक है। Okay. थैंक ठीक है. यू। ओके, Thank you. बाय बाय बाय।